वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ पेल ब्लू सिरपरी लिक्विड। ये एक पेल ब्लू सिरपरी लिक्विड है। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज़ H2O2. It freezes at 0.5 degrees Celsius and has a density of 1.4 in pure state. इसकी डेंसिटी 1.4 होती है प्योर स्टेट में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डायमैग्नेटिक। इट इज़ मोर हाईली associated via hydrogen bonding than water. Although it is a better polar solvent than H2O, however, it can't be used as such because of strong auto-oxidation ability. Dipole moment of H2O2 is 2.1 D. Chemical properties. Decomposition. Pure H2O2 is an unstable liquid. ये एक unstable liquid होता है और decompose होता है into water and oxygen either upon standing or upon heating. 2H2O2 gives 2H2O plus O2. Delta H equals to minus 196.0 kilojoules. Oxidizing nature. It is a powerful oxidizing agent. ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल, एसिडिक या फिर एल्कलाइन मीडियम. एग्जाम्पल 2Kl plus 2H2O2 gives 2KOH plus I2 इन न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम में इसका ये होता है रिएक्शन. 2FeSO4 plus H2SO4 plus H2O2 that is hydrogen peroxide gives Fe2SO4 whole thrice plus 2H2O in acidic medium. MnSO4 plus H2O2 plus 2NaOH gives MnO2 plus Na2SO4 plus 2H2O in alkaline medium. Reducing nature. Hydrogen peroxide has tendency to take up oxygen. उसकी tendency होती है ऑक्सीजन लेने की from strong oxidizing agent and thus act करता है वो as reducing agent. It can act as a reducing agent in acidic, basic or even in neutral medium. In acidic medium, H2O2 gives 2H plus O2 plus 2E minus. In alkaline medium, H2O2 plus 2OH minus gives 2H2O plus O2 plus 2E minus. Bleaching action. H2O2 acts as a bleaching agent. वो एक bleaching agent की तरह act करता है due to the release of nascent oxygen. Release of nascent oxygen की वजह से वो ऐसे act करता है. H2O2 gives H2O plus O. Thus the bleaching action of H2O2 is due to oxidation. ये oxidation की वजह से होता है. It oxidizes the coloring matter to a colorless product. Coloring matter plus oxygen gives colorless matter. H2O2 is used to bleach delicate materials. Delicate materials just like ivory, silk, wool या फिर leather. Acidic nature. Anhydrous hydrogen peroxide is acidic in character. Its dissociation in aqueous solution may be given as H2O2 plus H2O gives H3O plus HO2 minus. It forms two types of salts. NaOH plus H2O2 gives NaHO2 plus H2O. NaHO2 is sodium hydroperoxide acidic salt. Next है 2NaOH plus H2O2 gives Na2O2 plus 2H2O. Na2O2 is sodium peroxide that is normal salt. Addition reactions. Hydrogen peroxide is capable of adding itself to ethylenic linkage. वो खुद कैपेबल होता है ऐड करने में एथिलीनिक लिंकेज को. Structure of H2O2. Hydrogen peroxide is non-linear, non-planar molecule. वो एक ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका. The single bond single bond linkage is called peroxy linkage. The structure is shown below. स्ट्रक्चर ये उसका ऐसे है. इन गैस फेज में 111.5 डिग्री and in solid phase 110 K that is 90.2 degree. Concentration of H2O2. Dilute hydrogen peroxide is concentrated to about 50% by slow evaporation on a water bath
It is future concentrated to 90% in a vacuum desiccator using concentrated H2SO4 as dehydrating agent. Further concentration to 99% is obtained by distillation under reduced pressure. Last traces of moisture is 99% of H2O2 are removed, or anhydrous H2O2 is obtained by cooling it to 263 K in a cold bath of ether and dry ice, followed by seeding with a few crystals of solid H2O2. When needle shaped crystals of 100% H2O2 separate out, these crystals are removed, dried and melted to get 100% H2O2. Storage of H2O2. हाइड्रोजन peroxide is not stored in glass bottles. ये glass bottles में stored नहीं होता है. Since the alkali metal oxides present in glass catalyze its decomposition, it is therefore stored in the paraffin wax, coated glass, plastic or Teflon bottles. Small amount of acid, glycerol, alcohol, acetanilide and H3PO4 are often used as stabilizers to check its decomposition. Uses of hydrogen peroxide. For bleaching delicate articles like wool, hair, feather, ivory, etc. For restoring color of old lead paintings whose white lead has blackened due to formation of PBS by H2S at atmosphere. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट करता है ब्लैक लेड सल्फाइड को टू वाइट लेड सल्फेट एज एन एरेटिंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ग रबर, as an antiseptic and germicide for washing wounds, teeth and ears under the name of peridrol. In the manufacture of sodium perborate, sodium percarbonate, these are used in high quality detergents as an anti-clothe, as an oxidant for rocket fuel in the detection of TiV and CR ions with which it forms peroxide of characteristic color. In the production of epoxides, propylene oxide and polyurethanes. In the synthesis of hydroquinone, pharmaceuticals and food products like tartaric acid. For pollution control of domestic effluents where it restores the aerobic conditions of sewage waste. For pollution control of industrial effluents containing Cn- ions, hydrogen peroxide oxidizes Cn- ions to harmless products. जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो ऑक्सीडाइज करता है Cn- आयन को हार्मलेस प्रोडक्ट्स में. हाइड्रोजन फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन even carbon. Metals like palladium, platinum, Au, etc. have the property of absorbing large quantity of hydrogen at normal or higher temperature. Colloidal palladium can absorb 2950 times its own volume of hydrogen, and palladium metal can absorb 900 times its own volume of hydrogen. इस फिनोमेना को हम occlusion of hydrogen कहते हैं. The occlusion property of these metals is in the order colloidal palladium greater than palladium, greater than platinum, greater than gold and greater than nickel. In solids, water molecules can also be present as zeolite water. Solids में water molecule जो होते हैं वो as zeolite water या फिर clathrate water के रूप में हो सकते हैं. आइस एक गुड थर्मल इंसुलेटर है. 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसे हम पेरिड्रल कहते हैं. इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 100 एंड मोलारिटी इज 8.8. यहीं तक था मेरा चैप्टर हाइड्रोजन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इस पूरे चैप्टर हाइड्रोजन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दें. थैंक यू.